तो हमने तैत्तिरीय उपनिषद में शिक्षा वल्ली और ब्रह्मानंद वल्ली दोनों देखा है और आज हम भृगु वल्ली आरंभ करने जा रहे हैं. We are going to start with Bhrgu Valli. And before we delve into Bhrgu Valli, कुछ भी ऐसा जो है यदि आप लोगों के मन में है, जो कुछ यदि प्रश्न हो या कोई कमेंट हो, एनीथिंग दैट यू वांट टू शेयर, कुछ कहना चाहते हो आप, तो यू आर वेलकम. एनीथिंग, एनीवन? चलिए ठीक है, फिर देन वी स्टार्ट. भृगु वल्ली में 10 अनुवाक हैं. सो जैसा हमने हर एक वल्ली में देखा है कि देयर आर चैप्टर्स व्हिच आर कॉल्ड अनुवाक, उस प्रकार से भृगु वल्ली में 10 अनुवाक हैं. और नाम भृगु वल्ली सिर्फ इसलिए है क्योंकि जो पहला अनुवाक है वो शुरू होता ही है भृगुर्वे वारुणी, तो वो भृगु से शुरू होता है, इसलिए भृगु वल्ली है. ठीक इसी प्रकार ब्रह्मानंद वल्ली भी क्योंकि ब्रह्मानंद से आरंभ होता है इसलिए था, और शिक्षा वल्ली भी क्योंकि शिक्षा शब्द से आरंभ होता है इसलिए था. हमने पंच कोशों को बहुत नजदीक से देखा, हमने समझने का प्रयास किया कि हर एक कोश का क्या अर्थ है और हमारी यात्रा अन्नमय कोश से आगे कैसे बढ़ती है. अच्छा, आज मेरे बैकग्राउंड में शायद काफी नॉइज हो क्योंकि पीछे शायद शादी वादी हो रही है, तो उसको हम लोगों को इग्नोर करना पड़ेगा. ये भृगु वल्ली कहानी है. वो पंचकोश जो हमने देखे वो उनकी उत्पत्ति ही कहाँ से हुई, क्यों ऋषि ने पंचकोशों के बारे में कहा है. बल्कि अगर भृगुवल्ली आप अब देखेंगे तो आपको लगेगा कि हमें भृगुवल्ली पहले करना चाहिए था, ब्रह्मानंद वल्ली बाद में करना चाहिए था, या फिर पुस्तक में भी भृगुवल्ली पहले होना चाहिए, ब्रह्मानंद वल्ली बाद में होना चाहिए. यहाँ पर हम एक्चुअली देखते हैं कि किस प्रकार वरुण के पुत्र जिनका नाम वारुणी है और उनको हम भृगु के नाम से जानते हैं, वो अपने पिता के पास जाते हैं और पूछते हैं कि ब्रह्म क्या है. जिज्ञासा है उनके मन में कि ब्रह्म क्या है, और वहां से शुरुआत होती है जब उनके पिता वरुण ऋषि उन्हें बताना शुरू करते हैं कि अन्नमय कोश है, और फिर आगे की यात्रा शुरू होती है. मैंने आप लोगों के साथ साझा किया ही है जो हमारी आज की रीडिंग है. भृगुर्वे वारुणी वरुणम पितरम उपसार अधीधि भगवो ब्रह्म इति तस्मै एतत् प्रोवाच अन्नम प्राणम चक्षुः श्रोत्रम मनोवाचमिति तम होवाच यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत् प्रयन्ति अभिसंविशन्ति तत् विज्ञास्व तद ब्रह्म इति स तपोतप्यत स तपस्तप्वा. तो इसका ट्रांसलेशन है कि वारुणी द सन ऑफ वरुण who was well known as Bhrgu once went to his father and said, Lord, please teach me about Brahma. Then what did Varuna do? He told him about food. उन्होंने जो शुरुआत की वो उन्होंने अन्न के साथ की. जो अन्नमय कोश हमने देखा है उसके साथ उन्होंने शुरुआत की. And then he went ahead to say about the life force, the eyes, the ears, the mind, and the organ of speech. And then to explain the nature of Brahma, he said, try to understand that Brahma is the source of everything.
that everything is sustained by it and that everything finally dissolves into it. So जो वरुण ने भृगु को सूत्र दिया कि कैसे पता कि ब्रह्म क्या है, तो वो सूत्र ये था कि ब्रह्म से ही सब कुछ उद्भूत है, वहीं से सब कुछ निकलता है, that is where everything emerges from. ब्रह्म ही सबको सस्टेन भी करता है और ब्रह्म ही है वो जिसमें सब कुछ विलीन हो जाता है. तो हमारे यहाँ जो ट्रिनिटी का कॉन्सेप्ट है, ब्रह्मा विष्णु महेश, तो ये ब्रह्म के ही 3 रूप हैं. तो दिस इज द सूत्र दैट वरुण gave to भृगु to know what is ब्रह्म. पर इसमें कुछ 2-3 बातें बहुत ही खूबसूरत हैं. पहले तो हम देखते हैं कि भृगु गए हैं अपने पिता के पास और उसके बाद पूछ रहे हैं, लॉर्ड प्लीज टीच मी अबाउट ब्रह्म. ये एक बहुत ही उत्कृष्ट बात है और बहुत ही, आई विल से इट्स अ वेरी स्पेशल थिंग. एक पिता और पुत्र का क्या संबंध होता है? यदि हम पिता और पुत्र के संबंध की बात करें और हम देखें तो पुत्र पिता के ऊपर अधिकार जताता है. That's a relationship. We feel we have certain right on our father, on our mother. Our discussions are not as if we are receiving some kind of teachings from them. हमारे जो भी बातचीत होती है, चर्चा होती है अपने पिता के साथ, वो रोजमर्रा की होती है, जीवन की होती है, मुझे क्या चाहिए उसकी होती है और हम बड़े अधिकार से कहते हैं कि मुझे ये चाहिए, मुझे इसके लिए पैसे चाहिए, मुझे वो चाहिए, वगैरह वगैरह. लेकिन यहाँ पर भृगु जब वरुण के पास जा रहे हैं तो वो कहते हैं, लॉर्ड भगवान प्लीज टीच मी अबाउट ब्रह्म. वो वरुण को वही स्थान दे रहे हैं जो ब्रह्म का होता है. और बिल्कुल सिर्फ इसी कारण से कि भृगु ने वरुण को जिस प्रकार अप्रोच किया है, that is full of humility and that is full of receptivity. और इसको यदि हम हमारी भाषा में कहें, जिसके ऊपर हमने हमेशा से इतना एम्फेसिस दिया है, तो that is full of पात्रता. भृगु ने अपनी पूरी पात्रता स्थापित कर दी, अपने पिता को पिता ना कह करके, क्योंकि जब वो ब्रह्म ज्ञानी हैं और भृगु को ब्रह्म विद्या चाहिए तो उन्हें शिष्य की तरह जाना पड़ेगा. वो एक पुत्र की तरह हक से नहीं जा सकते हैं. तो यहाँ पे ये बहुत ही सुंदर तरीके से स्थापित हुआ है. बल्कि शंकर तो आगे ये कहते हैं कि पिता और पुत्र के रिश्ते को ही क्यों दिखाया ऋषि ने. और शंकर कहते हैं कि इससे, शंकर से मेरा अर्थ शंकराचार्य से है, वो कहते हैं कि ये बताता है कि ये जो ब्रह्म विद्या है ये कितनी प्रेशियस है, कितनी अनमोल है. इतनी अनमोल कि एक पिता अपने पुत्र को ये देने में गौरवान्वित होता है, वो हर्षित होता है, वो प्रसन्नचित होता है कि पुत्र ने जो मांगा है वो सबसे ऊंचा है. That's the highest possible. The son is not asking for anything which is of a lower grade. Son is asking for something which is of real high quality. And not just that he is asking, the way he is asking, full of the qualification that he qualifies to know it. So that is what Shankaracharya says, that possibly this is the reason why father and son has been highlighted. But the way he approaches is very, very beautiful. The other thing that is very interesting to notice is, वरुण कहते हैं तत् विज्ञाग्यासस्व means go ahead and analyze and investigate it. Even though he has given the sutra that Anna is
Brahma. That's where he starts with. He is not saying, talking about Brahma as the highest. He is talking from the space which Bhrigu has some clue of. अन्न के बारे में हम सबको पता है, तो वहां से शुरुआत करना आसान हो जाता है. सीधे आनंदमय कोश से यदि हम शुरू करते हैं तो वो जटिल है, कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लिकेटेड है. लेकिन अन्नमय कोश से आरंभ करते हैं तो दैट इज समथिंग जो कि क्योंकि हम स्वयं को शरीर रूप में देखते हैं, आकार में देखते हैं, तो उसके साथ रिलेट कर पाना काफी सरल हो जाता है. तो भृगु को वरुण सूत्र दे करके वहां छोड़ते नहीं है. वो कहते हैं कि फूड ओनली इज ब्रह्म, गो एंड इन्वेस्टिगेट इट. एंड Bhrigu takes this with full humility, and he says, and he goes to begin to practice austerities. अब austerities मतलब क्या? What does austerities mean? Austerity means the something. Please carry on. रोहित, आप कह रहे हैं कुछ? मैं तपस्या कह रहा था. हाँ, कठिन तपस्या, जिसको मतलब बहुत मुश्किल साधना कह सकते हो. तो सबसे मुश्किल साधना कौन सी है? भूखे रहना. अन्नमय कोश बोल रहा है भूखे रहना सबसे कठिन साधना है. देखिए, साधना भी कई प्रकार की होती है. सेल्फ डिसिप्लिन, हाँ, वेरी वेरी मच ऑन ट्रैक पारुल. साधना भी कई प्रकार की होती है. एक तपस्या हम जानते हैं जो तंत्र मंत्र के हिसाब से किया जाता है. एक तपस्या हमने देखा है कि राक्षसों ने भी वर्षों वर्षों तक तपस्या की है कुछ पाने के लिए, शंकर, शिव से, ब्रह्म से, एटसेट्रा एटसेट्रा, कि उनको ये अस्त्र चाहिए, ये शस्त्र चाहिए, वगैरह वगैरह. किंतु जो तपस्या सबसे श्रेष्ठ है, जिसकी कृष्ण बात करते हैं, जिसके सभी उपनिषद बात करते हैं, हर वो जो ब्रह्म की तरफ जाता है, वो अनायास चाहे ना चाहे इस मार्ग से होकर के जाता ही है, जिसकी पतंजलि बात करते हैं. वो है गेटिंग दैट होल्ड ऑन आवर माइंड. जब हम अपने मन को नियंत्रण में ला पाते हैं, मन को समझ पाते हैं, तो जो that is the austerity of the highest type or highest quality. So that is, so when Bhrigu goes to perform austerities, he is actually getting deeper into the whole process of Chintan, Manan, Nididhyasana. ठीक है? So this is the first अनुवाक. ये पहला अनुवाक है. दूसरे अनुवाक पर आते हैं. Bhrigu practiced austerities, and what he comes to know about? He comes to know about annam brahmeti. Anna hi brahma hai. Food is brahma. Now, why does he come to know about this? Because as per the sutra given by his father, that Brahma is what from the entire cosmic dance emerges. Brahma is what sustains it, and Brahma is where all of it dissolves. So he sees that for anything to happen, food is important. No jiva can sustain itself without food. So food is where we all take birth. Food is what sustains it. And once we die, we become food to something else. Any other creature die, they become food to something else at the end of the day. And when he is talking of food, he is indicating to all the Panchabhuta.
he is not just talking of annam, क्योंकि अन्नम भी क्या है, अन्नम is the grossest form of the पंचभूत, जिसको हम जानते हैं कि आकाश है, जल है, वायु है, अग्नि है और पृथ्वी है। तो अन्नम में ये पांचों तत्व का समावेश है। तो अन्न जो है वो कहीं भी आप सुनते हैं तो प्लीज नो ही इज टॉकिंग ऑफ ऑल द 5 एलिमेंट्स। सो नाउ Bhrgu is able to see how the sutra that his father had given, Anna is actually fulfilling the condition. Yet, Bhrgu is not happy. Perhaps what makes him unhappy? He actually goes back to his father. He says, the Upanishad says, Punare Varunam Pitar Mup Upasara Adhiti Bhagavo Brahmeti. मुझे फिर से ब्रह्म के बारे में बताइए. Tell me further about Brahma. That is what he's saying. He goes to his father and says, "Oh Lord, please teach me about Brahma." When Varun has already given him the sutra about Brahma. What do you think is asking him to ask this question again? He could have stayed satisfied that his father has already given all when he has gone to him with such humility. But he is not able to hold himself. And he goes back to ask him again. What do you think? realize हो गया होगा ना कि ये तो ब्रह्म नहीं है. Okay. नहीं, कुछ और भी है उसने भी, ये तो है लेकिन फिर भी कुछ और है. अभी जिज्ञासा शांत नहीं हुई है. Not satisfied like. So what probably is unsettling? कि उसने बोला कि ये पंचभूत जो है ये ब्रह्म है, वो उसने मान लिया कि हाँ ये ब्रह्म है, लेकिन अभी भी एक्सपीरियंस में जब उसको लाता है तो उसको लगता है कि कुछ और भी है ब्रह्म, सिर्फ ये नहीं है. मे बी. So is it the impermanent nature of the body? Because if it is Brahman, it should be permanent, right? I mean, खत्म नहीं होना चाहिए. Wonderful. It has to be never born, never died. It has to be infinite. ब्रह्म के कई गुणों में एक ये बहुत बड़ा गुण है कि कोई आदि अंत नहीं है, समयातीत है. लेकिन यहाँ हम देखते हैं कि अन्य समय में है, पंचभूत समय में है, और पंचभूत आते हैं और खत्म होते हैं, रूपांतरित होते हैं. हम ब्रह्म के विषय में जानते हैं that it doesn't change. और यहाँ पर हर समय शेप एंड फॉर्म चेंज हो रहे हैं, रूपांतरण हो रहा है. So obviously there is more to it. More to it मतलब पहले फिर ये ऐसा क्यों बोला कि यही है? इसका मतलब वो भी है ब्रह्म, लेकिन वो चेंज होता है तो नहीं भी है, तो है भी और नहीं भी. ब्रह्म तो सब कुछ में है ना कोमल जी. हाँ. ब्रह्म तो सब कुछ है. बात तो दृष्टि की है, क्योंकि हम नहीं मानते हैं कि ब्रह्म सब कुछ में, इसलिए हम सबको अलग अलग तरह से देखते हैं ना, विविधता में देखते हैं. मैं हूँ, ये आप है, वो आप है, वो आप है. यदि हमको हर चीज में ब्रह्म दिख जाएगी ना, तो हमारा जो हर चीज के प्रति दृष्टि है और व्यवहार है, both the way we look at things and the way we behave with things, that will be similar, that will change. Right now we have lot of comparisons. इनके साथ ऐसा व्यवहार करना है, इनके साथ ऐसा व्यवहार करना है, इनके साथ ऐसा व्यवहार करना है. We have those categories. व्यवहारिक जिंदगी में वो जरूरी भी है. व्यवहारिक जिंदगी में तो वो व्यवहारिक जिंदगी में जरूरी है, किंतु सेंटर क्या है? सेंटर तो हमारे व्यवहार का डर होता है ना, कंपैशन थोड़ी होता है. हमारे व्यवहार का सेंटर इनसिक्योरिटी होता है ना. We behave in certain way because we are afraid that if I don't behave like this, this person will harm me in this and this capacity, or will take advantage of me in this and this capacity. We do not behave in this way, in a way which will possibly motivate, inspire the person to move towards ब्रह्म विद्या. हम ऐसा कुछ तो नहीं करते हैं कि उसके सामने कुछ ऐसा खोल के रख दें, या हमारे
बीइंग में उसको कुछ ऐसा दिख जाए कि वो बोले कि यार क्या बात है, कुछ तो है, इतना कुछ हो गया फिर भी ये व्यक्ति हिल नहीं रहा, इतनी तटस्थता कहाँ से आ गई, इतना निश्चय कहाँ से आ गया। ये तो हम हमें देख के कोई नहीं बोल पाता है ना, क्योंकि हमारा जो केंद्र है, जहां से हमारा कर्ता काम करता है, वो डर है, वो भय है, वो खत्म हो जाने का डर है, ह्यूज इनसिक्योरिटीज, असुरक्षा का भाव जकड़ा हुआ है। सो yes, we see a lot of variety and we behave in lot of variety and we are never able to see that common element in each of the things. You know, when you, ये आगे है भी जाकर के इस उपनिषद में, अगर कॉमन एलिमेंट दिखने लगेगा ना, तो हमारे पास जो है वो दूसरों को देने में आवश्यकता के समय हमें संकोच कभी नहीं होगा। हमें ये नहीं, हम पहली बात तो एक्यूमुलेटिव टेंडेंसी खत्म होगी। You will, it's not that you do not live your life, it's not that you don't bring things that's required, it's not that you don't make your life comfortable, go ahead and do it, but if you find somebody who needs it more, you will not even mind sharing. हाँ रोहित। कृष्णा जी, जब हम बोलते हैं भृगु ने तपस्या की उनके पिताजी के वाक्य सुनने के बाद, तो आरवी सिंह उन्होंने बैठकर उस विषय में सोचा, या फिर उन्होंने अपने सारे विचारों को दूर रखकर केवल अपने शरीर के ऊपर ध्यान करना शुरू किया? What could it mean? This could mean what you are saying, yes. यहाँ पर हम बिल्कुल उन तपस्या की ओर नहीं देख रहे हैं जो हम टिपिकली कि एक पैर पे बैठ के कर रहे हैं और बर्फ में बैठ के कर रहे हैं वगैरह वगैरह, नॉट लाइक दैट। ये तपस्या है मन को एकाग्रचित करने की तपस्या, कि ये मन जो अभी इतना कुछ देख रहा है और किसी में ब्रह्म नहीं दिख रहा है, उसको कैसे कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं, कैसे फोकस कर रहे हैं। दैट इज द तपस्या दैट वी आर टॉकिंग ऑफ। ठीक है। So now Varun again says, practice austerities again and try to know Brahma. Austerities and Brahma are the same. And Bhrgu resumes his austerities, and this is where chapter 2 stops. Thus ends chapter 2. Why is Varun saying that austerities and Brahma are the same? जो मुझे समझ में आया वो ये है कि तपस्या का जो अर्थ है, जब हम वेदों के पास जाते हैं तो वहां जो तपस्या होती है उसमें आहुति हम स्वयं होते हैं, हमारा अहंकार होता है। तब वो वातावरण है जिसमें अहंकार की आहुति दे करके हम ब्रह्म तत्व को प्राप्त करते हैं। उस दृष्टि से देखते हैं तो जब वरुण कह रहे हैं कि तपस्या और ब्रह्म एक ही है, तो वो शायद यही कह रहे हैं कि तपस्या में तुम नहीं बचोगे, क्योंकि तुम जो हो, जो अपने आप को समझते हो, जानते हो, मानते हो, जो इतनी सारी तुम्हारी आइडेंटिटीज हैं, वो सब गलेंगी, उन सब का विगलन होगा और वही ब्रह्म है। What else is ब्रह्म? क्योंकि जब उनका विगलन होगा तब इस बात का बोध हो जाएगा कि हर वो बात जो ब्रह्म के लिए हम उपयोग में लाते हैं, that is who you are, because that is all that remains. और इसीलिए वरुण ऑस्टेरिटी और ब्रह्म को एक ही बता रहे हैं। ठीक है।
अब इसके बाद से जो भी हम देखेंगे वो बहुत सरल है, क्योंकि जिस प्रकार से अन्नमय कोश के ऊपर चर्चा हुई है उसी प्रकार से आगे प्राणमय और मनोमय और विज्ञानमय कोशों के ऊपर भी चर्चा हुई है। इससे सिमिलर टू जो कबीर का एक दोहा था वैसा ना, कि जब मैं मिला समथिंग तो मैं नहीं, और मुझे एग्जैक्टली याद नहीं रहता है वो। इज इट सिमिलर टू दैट, राइट? प्रेम गली अति साकरी, जामे दो ना समाही, जब जब मैं था तब हरि नाही, अब हरि है मैं नाही। सिमिलर ना, वो एक ही मीनिंग हुआ ना। एक ही बात है, अलग अलग तरीके से कहा गया है, क्योंकि भाषा अलग है, बोली अलग है, जिन लोगों से कहा जा रहा है वो लोग अलग हैं बस, और जहां पर हम बैठे हैं हम अलग हैं, इसलिए अलग अलग बात, सत्य तो एक ही है ना पारुल। तो कितने भी तरीके से कहा जाए, कहीं ना कहीं जाकर के आपको जब दृष्टि एक होती है ना, तो यू विल बी एबल टू एक्चुअली सी दैट इन एवरीथिंग। that's the beauty of it, and that is so joyous. I don't know what's the word I should use, but that is so wonderful and beautiful to experience that अरे यही तो है, यही तो है, यही तो है, और अचानक से बिल्कुल कौंधता है कि उफ, और हम लोग कहाँ फंसे हुए हैं। ठीक है, सो मूविंग टू तीसरा चैप्टर। प्राणो ब्रह्मेति व्यजानात। So now that Bhrgu is doing the austerities, he realizes that prana hi brahma hai. Bhrgu comes to know that prana brahma iti vyajanat. This is what he comes to know. And why it is so? For it is from prana that all beings have emerged. Then having emerged, they are also sustained by it, and when they die, they dissolve into it. Having known this, Bhrgu again went to his father Varuna and said, Lord, please teach me about Brahma. अब जो अगला चरण है, भृगु अन्नमय कोश पर मेडिटेट करते करते प्राणमय कोश में प्रवेश कर गए हैं, और प्राणमय कोश को उन्होंने बिल्कुल अन्नमय कोश की तरह देख लिया है। अभी दृष्टि स्थूल थी तो अन्न दिख रहा था, पंचभूत दिख रहे थे, अब दृष्टि थोड़ी सूक्ष्म हो रही है। सो ही इज एबल टू सी द प्राणमय कोश, बिकॉज प्राण इज व्हाट where from everything comes. Without prana, nothing is possible. Then pranamay kosh is what sustains. Without prana, we can't stay alive. And when we die, we dissolve into it. And having known this, Bhrgu again went to his father Varuna and said, Lord, please teach me further about Brahma. And his father gives the same answer. Try hard to realize Brahma through austerities. Austerities and Brahma are the same. And Bhrgu practiced austerities, and thus ends chapter 3. स्पष्ट है या इसमें कुछ है जो जिसकी चर्चा करी जाए? Anything that needs more elaboration? ये जो बार बार उनके पिताश्री बोल रहे हैं ऑस्टेरिटीज इटसेल्फ और ब्रह्मन, तो एक जे कृष्णमूर्ति का एक स्टेटमेंट था कि द प्रोसेस इटसेल्फ इज द गोल। आई मीन जो आप जो क्या कहते हैं, इट्स देयर इज नो एंड गोल, द इट्स सिमिलर, आई डोंट नो इफ आई एम एबल टू आर्टिकुलेट इट, बट द प्रोसेस इटसेल्फ इज द गोल। मतलब ऐसा कोई एंड में कोई गोल नहीं है, लेकिन आप जो अभी यहीं पर कर रहे हो वही ये है। सो व्हेन ही सेज ऑस्टेरिटीज इटसेल्फ इज ब्रह्मन, is that something, is he speaking in something like that thing? So when Krishnamurti says process itself is the goal, all he is trying to do is stop being goal oriented, because what right now with you lies is the process. You are in the process, and that is what it is. And if you will understand the process in its totality, you will know everything. The entire challenge of
mankind is we do not do anything in totality. We do not get into anything in totality. Even if you understand anger in totality, even if you become angry in totality, that you become anger, you will be sorted. But we have a threshold wherein we stop every time. We do not go beyond it. So, and this is what the entire conditioning process has done. There is a taming way. Don't get so angry, don't get so frustrated, don't get so depressed. And there is this should and don't, which has been put everywhere. So what you're saying is also right, Rohit. It is all about how you want to look at it and relate to it. When austerities are Brahma, you are the austerities, and hence the Brahma. And similarly, what Krishnamurti is saying, that the process is the goal. So when you are the process, you have already achieved it. So yes, in if you look at it, both are actually the same thing, again being said in two different ways. That makes it more understandable. Yeah, so then it depends as to what we are able to relate better. This is what then happens. Krishnamurti, when he talked about it, he was in the era wherein people were getting goal oriented. He was talking to people who were taught dream big, have higher goals. Varuna, in the era that he had been talking, the time when Taittiriya Upanishad came into existence, that was a time of austerities. That was a time wherein tapasya was given a lot of importance. Yajna was given a lot of importance. So here the Rishi is comparing austerities with Brahma, and there Krishnamurti is talking of it as the process. That's all. Makes a lot of Okay. So the Then just one more thing came to the book. Like when these Upanishads and Vedas and all those was written, that was a different time maybe, but we say they are still relevant. Like everything is as it is because truth is the same. तो फिर थोड़ा सा इसमें कि वो वाला टाइम ऑस्टेरिटीज का था और ये वाला टाइम ऑस्टेरिटीज का तो नहीं है, तो इसका मतलब कि उसको हम डायरेक्टली रिलेट करना आजकल के टाइम में कैसे रिलेट करें कि वो आजकल के टाइम का बन जाए थोड़ा, और बस जस्ट समथिंग के उस समय की ऑस्टेरिटीज अलग थी, आज की ऑस्टेरिटीज अलग है. आज भी आप जिसको हार्ड वर्क कहते हो वो तपस्या ही तो होती है, पर क्योंकि तरीके से तपस्या नहीं हो पाती है तो कुछ नहीं मिलता है. हम अलाइन नहीं हो पाते हैं, हमें उसका स्वाद ही नहीं पता चलता है, क्योंकि हम तो मर मर के कर रहे होते हैं, गधों की तरह हार्ड वर्क, कठिन काम, तो हमारा उसके साथ कोई अलाइनमेंट नहीं होता है. दोनों ही ऑस्टेरिटीज हैं. एंड देखिए, ये उपनिषद जब कोमल हम कहते हैं कि समयातीत है और हर समय में रेलेवेंट हैं, दे आर बियॉन्ड टाइम, ऑल दैट वी से इज it is applicable during all times, and the meaning will change based on what is relevant today. So my guru talks about very interestingly. He says that today's guru is money, today's master is money. That is what you need to slay. Today's master is your corporate job. Today's master is your typical attire of tie and coat and all that. That is what you need to slay. So who is your God today? What do you bow down to? Today you bow down to these things. So you need to slay these things. So that which you have created as God, है ना, जो बाप बड़ा ना भैया सबसे बड़ा रुपया, हमारी रोज की भाषा ही बता देती है कि हम किन चीजों के ऊपर अपना मूल्य लगा करके बैठे. So when you are looking at any such text, you will have to look at them in the light of
how it is applicable in the current times. Words are not to be picked up. What words are indicating, that has to be understood. Okay. Okay. So moving to the 4th chapter, Bhrgu realizes that the mind was Brahma. So now he is Mano Brahma iti Vyajanat. So when he performs the austerities, he moves on to the Manomay Kosh, and he understands that probably mind is the Brahma. Why so? It is again fulfilling the condition that Varuna gave to him initially, which is from Brahma the world emerges. Brahma is what sustains the world, and Brahma is where the entire world disappears. And there he sees that it is from the mind itself that these beings have had their birth. Having been born, they are sustained by the mind, and when they die, they go back to the mind where they disappear. So mind is all that is making this drama to happen. Without mind, there is no life. Everything has mind based on its current level of grossness. So if you are a very gross thing like a stone, then stone's mind also is that gross. And probably our mind is not capable of understanding stone's mind because we are not that gross. And we have our mind. Animals have mind in their way, which allows them to act in probably the way we say that animals are conditioned physically. So that's what is the expression of their mind. Having known this, Bhrgu again went back to his father Varuna and said, Lord, please teach me about Brahma. His father replied, try to understand Brahma well by practicing austerities. Austerities and Brahma are the same. Bhrgu then practiced more austerities. Thus end the 4th chapter. Now this is very interesting that at no space Varuna is giving him the direct answer. Because Brahma can never be known by answer. Answers can satiate intellectual query. But it can never satiate, it can never fulfill the being. And that is why it is said that as many people, so many meditative techniques would be there. You will have to get into meditativeness based on your own conditioning, what you relate more with, what will help you to grow more. And there cannot be any blanket statement. At every stage, Varun is giving him a push. He is not confirming that what you have found is correct or incorrect, but he is giving him a push. When he finds about Manomay and goes and tells him that, okay, this is what I found, but please tell me more, tell me further. He is not saying that what you have found is incorrect, because if Brahma is in everything, then how can that be incorrect? But if you want to live in that experience of Brahma, if you want to be seated in Brahma, यदि आप स्थापित होना चाहते हैं ब्रह्म में, तो अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश ये पर्याप्त नहीं है, फिर आगे कुछ है। और भृगु को बार बार वरुण उसी ओर जाने के लिए संकेत दे रहे हैं। Then the 5th chapter, Pancham Anuvaka. Now it's the Vijnanamaya Kosha, wherein Bhrgu discovers Vijnanam Brahma iti Vyajanat. So now it's Vijnana, which is Brahma. Vijnanat dvayev khalvi mani bhutani jayanti. And it's the same thing that he is known about every other kosha that he discovers here also. All beings that exist are born from the intellect. Having been born, they are looked after by the intellect, and as they die, they go back to the intellect and merge in it.
Having known this, Bhrigu again went back to his father Varuna and said, Lord, please teach me about Brahma. Varuna replied, try to know Brahma well through austerities. The practice of austerities is nothing but Brahma. Bhrigu practiced austerities. So every time Bhrigu is getting wiser from Annamaya Kosh, he's moved to Pranamaya Kosh, to Manomaya Kosh, to Vijnanamaya Kosh. At any given point, he is not having any contempt for his father that, come on, yaar, he's my father and he's still not telling me what Brahma is. I'm going to him and asking him umpteen number of times. We get into hard feelings. एक बार में नहीं बता सकते हो क्या? पूछ रहे हैं तो ठीक से बताओ. And we get unsatisfied by the answers also. Dissatisfied. नहीं चला मुझे इनके पास वापस. मुझे नहीं पूछना है इनसे वापस. But look at the humility of Bhrigu. Somewhere he realizes कि हर तपस्या के साथ उनकी पात्रता में वृद्धि हो रही है और इसीलिए वरुण उनको भगा नहीं रहे हैं. वरुण उनको प्यार से और आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रहे हैं. कह रहे हैं आगे कुछ और है, जानना तो तुम्हें ही है, मेरे बताने से वो तुम्हें मिलेगा नहीं. Because it is about knowing, it is not about believing. मैं बता दूंगा, तुम उसका विश्वास कर लोगे. But the moment you know, you become that. You live that. And every time, Bhrigu is going to Varun with the same humility. And he's every time saying, Lord, tell me more about it. So there is no बिल्कुल जरा सी भी श्रद्धा में कोई कमी नहीं है. और हर बार वो उतनी ही श्रद्धा के साथ जाके पूछते हैं कि मुझे और आगे बताइए. With this we enter to 6th Anuvak, chapter 6. And here he discovers Anandamaya Kosh. Anando Brahmeti Vyajanat. Anandah Brahma iti Vyajanat. Bhrigu came to know that bliss is Brahma, for it is from bliss that all these beings are born. Having been born, they are supported by bliss, and when they perish, they go back to bliss and disappear into it. Bhrigu learned this from Varuna, who taught him this truth. This truth is in the empty space of heart. Now he is going ahead to even locate where is this truth. So we have seen that Anandamaya Kosh is the closest to self, is the closest to Brahma. और हमने पहले भी पीछे भी देखा था ब्रह्मानंद वली में कि आनंदमय कोश है कहाँ, तो उसके लिए जिस स्थान को कहा गया है, जो स्थान बताया गया है, वो है हृदय की गुहा में छुपा हुआ है. हृदय इज नॉट द फिजिकल हार्ट, हृदय इज द सेंटर ऑफ हु वी आर, और उसकी गुफा में छुपा हुआ है. इसका अर्थ ये है कि इट इज सो सीक्रेटिवली residing there that despite being in us, we have no realization of it. And entering the cave is like entering an unknown space. A cave which is not known to us. We do not know where it is, how deep it is, how long it is, how dark it is. Where do we have to go? How do we have to search? And that's where the Rishi says that it lies. So this truth is in the empty space of the heart. He who knows this is established in the bliss of Brahma. He also possesses much food and is capable of eating much food. Now from here the Upanishad is taking a different turn. He who knows this is established in the bliss of Brahma. He also possesses much food and is capable of eating much food. He has many children and possesses many animals, and he radiates the power of Brahma. He is indeed great. His fame spreads far. So why is the Rishi saying
he also possesses much food and is capable of eating much food. Anything emerging? This last line, can you please repeat? Rishi says that he also possesses much food and is capable of eating much food. What is the meaning of this? Did you get? So as we said just a few anuvak before also, food is not about the physical food. Food is the indicative of everything that is made up of panchabhuta. And food is on the physical plane. All of that panchabhuta is a physical plane thing. So the Rishi says, he who knows this is established in the bliss of Brahma. He also possesses much food, means he is equally capable of enjoying all that is available on this physical plane. Now, why does Rishi say so? Can I try to say what Please. I think? Sure. So it's like a grahan karne ki capacity. It could be food or water or anything. Absorb karne ki capacity unki bahut zyada hai. So are we saying that agar hum Could that be that? So are we saying that agar hum 1 kilo अगर हम चावल आनंदमय कोश में हैं, नहीं, it's not about how much they can eat or how much, जैसे इतना चावल खाया तो कितना डाइजेस्ट करके कितना प्रोटीन बना सकते हैं या हीमोग्लोबिन कितना हाई हो सकता है. It's not about that. It is the intake in all forms. अभी हमने कहा ना पंचभूत, तो whether it is पानी से, हवा से, सूर्य से, किसी भी चीज को absorb करने की capacity और उससे whether it is not just nutrition but intellectual absorption भी, सभी चीज लेने की capacity उनकी बहुत ज्यादा है. Okay. ठीक है. Blissful है in like when हम सबसे ज्यादा जो भी पढ़ते हैं या जो कुछ भी हम सुनते हैं, देखते हैं, सीखते हैं, when do we absorb the most? When we are in a blissful state. Absolutely. So one of it could mean that also. Yeah, definitely. So when we are in the blissful state, yeah. Somebody was saying something. Can I just sure. try to? Go ahead. Does that mean like since he's already gone beyond all the koshas and he's known the actual Brahman, so maybe he's not compulsive anymore about anything. He doesn't have attachment. He doesn't have likes and dislikes. So Yes. he can do whatever is needed at the time without very nice. being attached. Or does it have something to do with nourishment? I mean, not just the physical nourishment, but he's capable of functioning externally also and nourishing the planet and people around him. Of course. Yes, he is definitely capable of nourishing himself and everybody and everything around the entire planet. And as you pointed out, Shreyas, he is able to enjoy everything because he doesn't have any apprehensions, neither does he live in likes or dislikes. There is nothing like attachment. In attachment, we can't enjoy. Have you noticed this? If you are attached to something, you become so cautious about it that you can't enjoy. You can't be free in your mind with it. बहुत ही स्थूल सा एग्जाम्पल लीजिए ना, गाड़ी, मेरी कार है जो मुझे बड़ी प्रिय है, अब मैं उसकी इतनी देखभाल करती हूँ कि मैं उसको लेके निकलने में डरती हूँ कि कहीं इस पे स्क्रैच ना आ जाए. So I can't enjoy the car totally. I can't take it to every other place that I need to. और उसको धोने पोछने में मेरा ज्यादा समय भी निकल जाएगा. So you are capable of enjoying the physical plane only when you live in that state wherein you are free of it.
It doesn't come to grab you, hold you. Similarly, you see with people, you can never enjoy with people with whom you are attached, because you will always be afraid कि इनको मेरी कौन सी बात बुरी लग जाएगी, ये कहीं चले ना जाए, ये कहीं मुझे कुछ ना कह दें, and all those things. But the moment you just can be with the person, then you will be able to listen to the person totally. You'll be able to see the person totally, not with any likes, dislikes, no conditioning, no filtration, no perception, and allow that being together to just flow. But the moment there are all the barriers, then enjoying the physical plane is simply not possible. Means is in that being in that okay state. If it's there, I'm okay. If it's not there, I'm okay. If my favorite thing I'm eating, it's okay. If I'm not eating, it's okay. Like enjoying it all plain. Like favorite. With or without. Even there is something that your senses enjoy. Your senses have got preferences. You are fully aware that the preference is of the senses. So if the sense gets it, wonderful, I will not stop it. But if the senses does not get it, I'm not going to cry that I did not get my favorite food. There is nothing like that. So that matter everything, not even food, like all the whatsoever is there on this, in our surrounding or in our mind, body, whatsoever. कहाँ थी मैं मुझे याद नहीं आ रहा है, परंतु ये चर्चा में सुन रही थी कि बुद्ध के संघ में प्रैक्टिस था कि जैसे ये तो हम जानते ही हैं कि उनको 5 घरों, right? हाँ, The bhikshus, they say they receive non-veg, what to do, something like that. That is fine. So Okay. the bhikshus were allowed to ask for alms from just 5 houses. If they get good, if they do not get good. But what was interesting for me to come to know was, वो सारा भोजन एक जगह ले करके मिक्स कर देते थे. उनको जो कुछ भी मिलता था, चावल, दाल, रोटी, सब्जी, whatever, everything was mixed totally and made up one food, and then you eat that, because you cannot have preference that I would like to eat the rice, or I would like to eat the sabzi, or I would like to eat the dal, etc. No preference. So this was the practice in the sangha. Whatever is collected as the alms, जो भी उनको भिक्षा में मिलती थी, जो भी भोजन मिलता था, वो सबको एक जगह एकत्रित करके उसकी खिचड़ी बना दी जाती थी, सबको मिक्स कर दिया जाता था. क्योंकि आप जब तपस्या की स्थिति में हैं, जब आप वहां पहुंचे नहीं हैं, तो ये बहुत आवश्यक है कि आप अपने इंद्रियों को इतना पोषण ना दें, आप उनको खुश करने में ना लग जाएं. Pleasing the senses should never be the practice, because more you will please the senses, more they will demand. You are giving them energy, so they will demand more energy because they are getting stronger and stronger and stronger. इसीलिए शम दम का बहुत महत्व है, controlling the mind and controlling the senses. So Richa ji, one thing comes to observation is the food, he possesses a lot of food, and children and animals. ये तीनों चीजें पुराने समय में धन माने जाते थे. They were considered as the wealth. One's cattle, one's children, and जो धान्य है अपने घर में. Absolutely, absolutely. So जब वो धन की बात कर रहे हैं, are they trying to say कि when one experiences oneness with everything, तो सबके बच्चे, मतलब वो तुकाराम की स्टोरी है ना कि he experienced oneness with everybody, तो वो अपने बच्चों में और दूसरे बच्चों में भेदभाव भी नहीं करते थे. वो वो ब्राह्मण रियलाइजेशन के जो आते हैं, एक्सपीरियंस oneness with everybody, वैसा वाला. हाँ, ये और जो आप कह रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है रोहित. और चिल्ड्रन से अर्थ है, ये भी कहा जाता है कि यदि आप उस ब्रह्म की दिशा में निकल गए हैं, तो आपसे जुड़े हुए जितने भी लोग हैं
उनका भी उद्धार हो जाता है. So it also means in that way that because children is about a relationship. So he says he has many children, and again what you are saying makes a lot of sense, because when he says he has many children, it simply means that children who come through me, they are not just my children. Everybody is my child. And possesses many animals. So animals is definitely the wealth thing. जैसे हम जानते ही हैं कि पुराने समय में यज्ञों में गौदान हुआ करता था, etc. So animal was the wealth, indicator of wealth, and he radiates the power of Brahma. He is indeed great, his reign spreads far. So that is what the और हाँ, maybe you want to complete the sentence. ना बोलिए. हाँ, और वही है ना, जो पर्सन कहता है ना कि मैं, मुझे क्या कमी है, मेरे पास सब कुछ है, तो वो फीलिंग जिससे यू स्टार्ट थिंकिंग सैटिस्फैक्शन इज हायर, संतृप्ति है आपके पास, तो जो भी है आपके लिए बहुत है, तभी आप एंजॉय कर पाते हो ना जो है उसको. जब ये भाव रहेगा कि मुझे और चाहिए, तो आप उसको एंजॉय कैसे करोगे, है ना. आई थिंक एक और इंटरप्रिटेशन मेरे दिमाग में आ रहा है कि जैसे क्या होता है जब आप में बहुत ज्यादा इग्नोरेंस होता है ना, फियर फैक्टर बहुत ज्यादा हाई होता है, एंड जैसे जैसे ज्ञान मिलता है तो फियर कम हो जाएगा, फियर कम हो जाएगा तो थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा तो थोड़ा करेज आ जाएगा, सो करेज आ जाएगा, सब कॉन्फिडेंस करेज फियर नहीं है, सो ओपननेस भी बढ़ जाएगी. सो आप जितना ओपन हो जाओगे तो आपको उतना थिंग्स विल कम आल्सो टू यू, एंड देन आई मीन आई थिंक थिंग्स इन द सेंस कि ज्ञान से लेके जो भी आपको चाहिए दैट ऑटोमेटिकली, जो ऐसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन बोलते हैं ना, इट ऑटोमेटिकली स्टार्ट हैपनिंग. आई मीन ये सब सीखना नहीं होता है जनरली, तो ऑटोमेटिक होता है. सो आई मीन आई थिंक वही जब जैसे जैसे ज्ञान मिलेगा तभी होगा ना, ऐसे अगर आप ऐसे डर डर के बैठे रहोगे या कुछ करोगे नहीं. सो आई थिंक दिस इज व्हाट इज लाइक, आई थिंक इट्स अ रिसेप्टिवनेस, कि रिसेप्टिवनेस आपकी बढ़ जाएगी, एंड ये ज्ञान से ही पॉसिबल है. दिस इज व्हाट आई फील. ज्ञान के देखिए ये सब ना एक साथ चलती हैं पारुल. सिर्फ ज्ञान नहीं चलेगा और सिर्फ भक्ति नहीं चलेगी, ये सब साथ में चलते हैं. वो ज्ञान जो आपको भक्ति दे पाने में असमर्थ है, फिर वो अज्ञान की तरफ ले जाता है. तो हम वो है ना, विनयम विनय प्रदाति पात्रताम. तो विद्या का एक बहुत बड़ा कार्य होता है कि वो आपको विनय और पात्रता भी प्रदान कर पाए. अन्यथा जो आपको विद्या मिल रही है वो विद्या नहीं है, अविद्या है. तो हाँ, रिसेप्टिविटी का बहुत बड़ा रोल है. आप ओपन हो जाते हैं, आप पे एक स्वीकार भाव है जीवन के प्रति. No, you are saying yes to life in everything. इसका मतलब ये नहीं है कि आपके साथ कुछ ऐसा नहीं हो सकता है जो कि देखने में कष्टदायी लगे. ऐसा नहीं है कि आपकी तबीयत नहीं बिगड़ सकती है, आपके पैर हाथ नहीं टूट सकते हैं, या इवन उतना असर नहीं करेगा, लेकिन उतना ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगा, लेकिन बिकॉज माइंड जब शांत हो जाता है, स्वीकार भाव होता है, उसके प्रति भी स्वीकार भाव होता है. और जब आप यहाँ पर आते हैं कि सब कुछ मैं हूं, तो ये भी भाव पता होता है कि मैं क्या नहीं हूँ. इन द सेंस कि what I must not be attached to. क्योंकि हम ब्रह्मास्मि संभव ही तभी है जब आप अटैचमेंट के आगे जाए, अन्यथा it is not possible. So yes, and hence you are able to enjoy everything much. It is not about the quantum of things. It is not about all that in the typical parameters of society that we take them in, but it is all about your state of mind, where from you're operating. So then, 7th अनुवाक, ये देख करके हम लोग आज इति करेंगे.
ऋषि कहते हैं, he who knows Brahma and understand the important role that food plays will never speak ill of food. This is like a religious vow with him. Annam na nindyat tat vratam prano va annam. So such a person knows that prana is food and the body consumes that food. The body is alive because of prana and is therefore dependent on prana. So there is an interdependence. So now this is not just applicable on the Annamaya Kosha and the Pranamaya Kosha, it is applicable on all the kosha. So there is an interdependency within each of them. Both are dependent on each other. One who knows both these annas, so even Pranamaya is being called as Anna, as dependent on each other, becomes world famous. He possesses large quantities of food and he also greatly enjoys eating. He has many children and a vast amount of animal wealth, and he also shines with the glow of spiritual knowledge. He is highly respected thereby and is well known as a teacher of spiritual truths. So it is the same thing being said in a different way. The interesting thing is, you see, the Rishi is every time reiterating he possesses large quantities of food and he also greatly enjoys eating. He has many children and a vast amount of animal wealth, and he also shines with the glow of spiritual knowledge. He is highly respected thereby and is well known as a teacher of spiritual truth. ये हम आगे के भी दोनों अनुवाक में 9वें तक में इसको इतने हिस्से को बार बार पाएंगे. They have been said every time. And Rishi possibly has said this multiple times because he wants to tell that what being in bliss means. He wants to tell this. He wants Bhrgu to get this in his head very clearly. What does it mean to be in this bliss? Why is this bliss so precious? Why is this so important? इसका महत्व इतना ज्यादा क्यों है? और इसका महत्व सिर्फ इसलिए नहीं है कि आप जो हैं वो एक किसी आध्यात्मिक दुनिया में बड़े आगे हो जाते हैं और वगैरह वगैरह. इसका महत्व इसलिए भी है क्योंकि आप जहाँ रहते हैं उसकी भी बड़ी महत्ता है, क्योंकि ये शरीर ही आपको इस जीवन को जान पाने की पॉसिबिलिटी देता है, संभावना देता है. If you had not been in this body form, you would never have come to know what bliss is. बल्कि हमने कई ग्रंथों में देखा है कि कहते हैं कि देव भी मनुष्य रूप में जन्म लेने को तरसते हैं. कई कहानियों में हमने देखा है कि देवता भी मनुष्य रूप में जन्म लेने को तरसते हैं. Because this is the only form that allows intelligence to express in a way wherein one can live in bliss of Brahma. So this is being reiterated every time. So this is where we stop today, and in the next session we will be finishing with the Taittiriya Upanishad. अब सिर्फ 3 अनुवाक बच गए हैं. 7वां तक हमने कर लिया. 8वां 9वां तो बिल्कुल एक ही जैसा है. 10वें में ही थोड़ी सी कुछ बात है. Anything till now? Anything that you want to express, share, ask? Please go ahead. Being in bliss means reaching those qualities of Paramatma or Deva or Devata. This is the difference between human body and Deva body. Like they are more they are more near to that Brahman state. Those qualities they have possessed. That's why they are called Deva. Then why Dev wants to come down to human body and experience it again? They've already experienced it. That's why those qualities, they are called Deva. In stories, what do they mean by saying in those stories? Dev, the very word, अगर आप इसके रूट में जाएंगे ना तो इसका अर्थ होता है to shine.
जो Dev means संस्कृत shine. मूल से जो निकलता है शब्द है, उसका अर्थ होता है चमकना, टू शाइन. So Dev is the word that we use traditionally to, now you come to the clarity of who shines. Only those who have reached the highest in their capabilities shine. जैसे आप take the example of physical plane, no? आप इतने IAS है, लेकिन आप जानते किस किस को हो, जो फर्स्ट सेकेंड थर्ड टॉपर्स होते हैं, they shine. So the best in that clan. Similarly, आप इतने एक्टर एक्ट्रेसेस को जानते हो, पर किन को बहुत अच्छे से जानते हो, who really shine, whom you would wow when it comes to acting, who have given that in the respective domain. So the one who reaches the highest by exhibiting their potential, उस अभिव्यक्ति में जो सबसे ऊपर पहुंच गया है, वो ही चमकता है. जब हम चमकने की बात करते हैं तो हम हीरे की बात करते हैं, डायमंड की बात करते हैं, हम सोने की और चांदी की बात नहीं करते हैं. So that which also stands the test of time, है ना. हीरा है सदा के लिए, सोना है सदा के लिए तो हम नहीं कहते हैं, because that's what we know, that even in the rarest of possibility नहीं है कि वो खराब हो. So that which shines. तो मुझ में एक गुण है, जैसे मेरा गुण है बहना, मैं जल देवता हो गई. So I live there, I live in that full expression of being the water. And why would I want to come back on this plane? Because I want to experience the bliss of Brahma. Even when I am being the Devata, I do not live in the bliss of Brahma. Devata is a state. Devata is a mental state wherein you are the best in whatever you do, you shine. But that is not the bliss of Brahma. The moment you are at that, the being of Devata will dissolve. Because right now there is something, no, some entity. अग्नि है, जल है, या फिर आप अपने देवी देवताओं को भी लीजिए तो उनके साथ आप कुछ गुण एसोसिएट करते हैं ना. हर कोई सर्वे सर्वा तो नहीं होता है. To live in that bliss of Brahma is to get dissolved with all the good. गुणातीत. Didi, even in all our Puranas, right? It actually very clearly says that all the positions of the Devatas, right? They're easily attainable, and even by normal human beings. And you have many stories where Indra is so scared about his position, like that he doesn't let anybody who does like serious penance. He comes and disturbs them in some way. If you do 100 ashram, is still there in Devas also. Yeah, because it is only a position. Like actually, in their own the way, thing they have is, shined only. Yeah, yeah, true. they remain in that state till that punya, I mean, till that quota of punya they have. After that, they have to come back to human life. Because these are positions, these are not people. Yeah. In fact, this is very interesting to note that in Purana we see that Indra is so scared of others snatching his throne, etc., etc. But when you go to Veda, Indra is the one who is beyond the sensual thing. Indra is the one who is, जो इंद्रियों के ऊपर जिसकी पूरी लगाम होती है ना, उसको इंद्र कहते हैं. तो वो उस इंद्र से इस इंद्र तक की जो यात्रा है ना, वो ढूंढेंगे तो बड़ा मजा आएगा. How does this transfer happens? Because the Indriya in the Veda and the Indra in the Purana, they totally they seem to be having different qualities altogether, contrasting qualities. I think it's because in the Rig Veda mostly Indra is actually given the highest god status, and after that
Indra, Surya, and all. They had separate groups, right? They were warring. Like Indra is the main god, Sun is the main god. Then somebody said Kala is the main god, and then This is what after is that, in later interesting, no? Upanishads, I think. This is what is Yeah. interesting, that where does this fight emerge between them? ये कॉन्सेप्ट जो है कहाँ से आया है उठ के कि इनके बीच में भी युद्ध हो रहा है? मनुष्य का मन बड़ा मजेदार है. हम जो कुछ भी देखते हैं ना, वो कुछ नहीं होता, वो बस हमारा रिफ्लेक्शन होता है. हमारे देवी देवताओं को भी तो हम वैसे करते हैं ना. देखो क्या कॉन्सेप्ट है, ठीक है, एट वन लेवल दे आर द एक्सप्रेशन ऑफ सर्टेन एनर्जीज. और जैसे कोई भी सरस्वती है तो उनको वीणा इसलिए दी गई है क्योंकि वीणा इज दी only instrument which whose vibration reaches the fetus during pregnancy. Veena is the only instrument. So there are certain reasons why they have been created in those kind of शक्ल सूरत एंड उस तरह के रूप क्यों दिए गए हैं. लेकिन फिर भी देखिए ना, कितनी मजेदार बात है कि हम उनको मनुष्य का मुख देते हैं क्योंकि वो हमसे ज्यादा प्रबल है, इसलिए 2 की जगह 4 हाथ हो जाएंगे. And all expressions given by us only. It's not case that we were like that or something. Exactly. So मनुष्य का मन बहुत मजेदार चीज है. वो कहाँ से उद्भूत हो रहा है और वो किधर तक चला जाएगा, कहाँ से क्या लेके जाएगा ना, ये इतना आसान नहीं होता. इट्स नॉट दैट सिंपल, इट्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड. इसीलिए मन को पकड़ना इतना कठिन होता है. एक तल के बाद दूसरे तल तक ऑस्टेरिटी, दूसरे तल से तीसरे तल तक ऑस्टेरिटी, फिर ऑस्टेरिटी, फिर ऑस्टेरिटी. तपस्या का कोई अंत नहीं है. तपस्या, पूरा जीवन ही तपस्या बन जाता है. ऋचा जी, एक डाउट था. There is no destination, you can say. The process is the destination. हाँ रोहित. डाउट ये था मेरा कि जब हम योग के कुछ टेक्स्ट देखते हैं, लाइक पतंजलि योग सूत्र, तो उसमें हम समाधि ये कॉन्सेप्ट आता है उसमें, विच इज लाइक अ हाईएस्ट फॉर्म ऑफ अब्सॉर्प्शन. क्या उपनिषद ऐसे किसी कॉन्सेप्ट के बारे में बात करते हैं, समाधि जैसे? उपनिषद समाधि शब्द का प्रयोग मुझे नहीं ध्यान में है. उपनिषद पूर्णता का प्रयोग करेंगे. उनके उपनिषद में जो शब्द आपको मिलेगा वो पूर्णता का है. टू ब्रह्म शब्द का प्रयोग होता है. समाधि तो एक when you hear Brahma, it sounds so unattainable. It looks like there is something from the other world. But the moment you talk of समाधि, हमारे पास एक कॉन्सेप्ट है कि तपस्या करके समाधि को प्राप्त किया जा सकता है. और पतंजलि ने जब योग सूत्र लिखे तो उनके ध्यान में ही वो लोग हैं जिनके लिए ज्ञान और भक्ति पर्याप्त नहीं पड़ते. ज्ञान क्या कहता है? ज्ञान कहता है कि तुम्हें इस बात का ज्ञान हो जाए, बोध हो जाए कि तुम क्या नहीं हो, तो तुम काटते जाते हो, नेति नेति करते जाते हो, और फिर अंत में तुम वहां पहुंचते हो जहां पे आप ये पूछते हो कि who is the one who is even cutting all this, and then that also is dropped. But for that to happen, bhakti is important. Now bhakti says that it is me who is small, who does not know much. There is a division, vibhajan, where from bhakti comes, and there is that ultimate, the source, the one, the purna. And the cry is that I want to merge into that, I want to dissolve into that. But then there are people who say that ये क्या है यार, मुझे भक्ति नहीं समझ आती, कैसे ये इतना सारा श्रद्धा और फेथ कहाँ से आ जाएगा. और ज्ञान जो है वो उनको और अहंकारी बना रहा है. तो पतंजलि कहते रुको, तुम डूअर्स हो, तुम्हें करने में बड़ा विश्वास है, तुमसे करवाता हूं. एंड दैट्स वेयर द योग सूत्र गिव्स यू द मेथडोलॉजी कि कैसे पहले शरीर को साधते हैं. तो जो शमदम, ये जो 8 ये हैं अष्टांग योग, तो दे आर ऑल दीज स्टेप्स, है ना. तो और उसमें जो है जब आप ध्यान तक पहुंचते हैं तो ध्यान आप करते नहीं है वहां, उसके पहले तक आपने जो कुछ भी किया है
that allows you to be to get into the dhyana stage. So that's how Patanjali brings it to us. It is all about, again, हम जिस काल में रह रहे हैं उस काल में क्या लोगों को समझ आएगा. So then he gives the concept of samadhi instead of giving the concept of purnata or shunyata, wherein samadhi is another moment which is dissolution, nothing else. Samadhi is सब चीज का समाधान हो गया, अब कुछ बचा ही नहीं. बचा किसके लिए नहीं बचेगा? उसी के लिए नहीं बचेगा ना जो है ही नहीं. जो है उसके लिए तो भी बहुत कुछ बचा हुआ है. हम जब तक होंगे हमारे प्रश्न मर नहीं सकते हैं. प्रश्न मरने का अर्थ ही होता है कि प्रश्नकर्ता मर गया. द आइडेंटिटी, द आस्कर, the one who is asking is no more, and that is what samadhan is all about. It is not about getting all the answers of the questions, because it is impossible to get all the answers of the question in this universe. It is about the dissolution of the person. तो अर्थ वही है, पूर्णता ही है, किंतु शब्द अलग है. This sounds more approachable, more possible to us. ब्रह्म जो है वो एकदम किसी और ही दुनिया की बातचीत लगती है. Didi, even in this Bhrgu Valli, right? So every time Bhrgu is going to his father and asking, I've reached some level, so do you think this is the level? And then the father says, no, this is not it. So inquire further, do more tapas, do more austerities. So I think, they're not saying what austerities he recommended and what Bhrgu did. So I think there's an undercurrent of some kind of sadhana, right? Some maybe it might be the yogic path, or it might be bhakti, or might be some other path. Because like through the analysis of the mind, through the analysis of the intellect, do you think for a student like Bhrgu it would be possible to know all these things just through psychological analysis? Okay, so one, at no space is the Varuna saying that no, this is not Brahma. When Bhrigu comes to him that Lord, tell me further about Brahma, at no space he says no, this is not Brahma. When whatever he finds, he always says that austerities and Brahma are same, and go and do more austerity. So if you have come to me asking that there is further to it and that is how you feel, you will have to go and find what is further to it. But I can tell you that this only will take you to that. Because you see what is happening every time Bhrigu is coming to ask for more, what is happening is the one who is asking is still alive. Complete dissolution has not happened. And one who is asking is alive because there is something that is not resonating with that. It's good. Brahma is Manomay Kosh. Brahma is all about mind. Kuch to khatka hai, jo ki sulaj nahi raha. That's not solving. Because of which he asks questions, which means the one who has this doubt, the one to whom this khatka is there, he is still there. And so Varun says that go and perform more austerity, which means you still need dissolution. You still need that focus, that concentration, wherein you dissolve. You are no more there. So no more interferences, no more roadblocks, nothing is there. So you can actually interpret austerity in whichever way you like. Coming from the Upanishadic statement, we have not yet heard of Upanishad doing a lot of the typical tapasya, and that's why we say Upanishad has always been meditating on mind, on figuring out what mind is and how it is performing and how it is working in me. So we interpreted it as that the tapasya here is about getting the mind at one place. So if you look at what mind is, here is the ahankar, the ego, and here is the Brahma. And what is connecting these two? It is the mind that is connecting. The mind at the end, or where it is full of identities, is equivalent to ego. And the same mind, when it dissolves, when it is no more,
then this only is Brahma, nothing else. And so in the language of Upanishad, we interpret austerities as like that. But I will never deny that, yes, if you get into certain meditative practices, it does help. But getting into meditative practices without the awareness that this can also strengthen the ego and what is happening to me, without that drashta bhav, it is very dangerous. So those who want to pick up meditative practices, please go and pick up meditation practices, but with this awareness of being the watcher, that who is meditating and what is meditating doing to this entity who is meditating. And when you have this awareness, then meditation processes can really do a lot good to you. The challenge with the processes are this part is totally forgotten. Okay, that's why in Jnana Teacher, Yoga, what are we planning after Taittiriya Upanishad? Anything on the cards? Or Patanjali Yoga Sutra. not decided? Patanjali Yoga Sutra. That's what you have decided? I have not read it, so I'm going to read it along with you all. Okay. So group study, group study. Yeah. Swadhyay. Online group study. With all these years, I have this cautiousness has come into me that I tried to look at everything in the light of truth, how it relates to truth, how it relates to ego, how it relates to how I define myself, the identity, and hence all the interpretation accordingly go. And that's the prarthana also, that's the prayer also, that may I not move here and there, and may I not shaken. So I have studied it in bits and pieces here and there. I have also studied it by myself some long time ago. But So along with that, some practices also will be following, or just reading and understanding part will be there? Like it starts with asanas, pranayam and all. So are we going to include that in practice also, or we are just going to understand what let us see asanas and what pranayam Patanjali and says. what is dhyan and all? Let us see what Patanjali says. We will see. We will go as per what he tells us to do. Okay. So Okay. it's like, you just explained ना कि वो father ने बोला आप इतना जाके कर क्या होता है, similar हो गया. पहले हम शुरू करते हैं, उसके बाद में देखते. Ah, buddy, correct. I think ऐसा करके ना, you actually, it's a very nice way to create the curiosity in the children. This is also I have seen कि अगर हम बच्चों को सब कुछ बता देना पहले दिन, तो हाँ ठीक है मुझे आता है, ऐसे हाँ अभी इतना करो and then come back. I really got this idea today कि ये ना बहुत अच्छी टेक्निक है पात्रता बढ़ाने की अपने बच्चों में. This is how I see it. Yes. This is how mind is. Mind wants to know everything, wants to come on the judgments. ऐसे भी पकड़ के. That's what it holds. It can't live without judgment too. And to learn to live in that uncertainty, that I don't know and I don't know what is going to unfold. It is so liberating that I cannot tell you. बहुत भीतर से कुछ है जो कि एकदम खुल जाता है, हल्का हो जाता है, आनंद की स्थिति में चला जाता है, क्योंकि अब आप ये नहीं कह रहे हो कि इसके बाद क्या होगा, इसके बाद क्या होगा. You are not being pulled in 1,000 directions. Living in the moment, it's like. जो आएगा देखेंगे ना, अभी देखते हैं वो पतंजलि हमें क्या गाइड करते हैं. अभी हमें क्या पता कहाँ से गाइडेंस आएगा, पता है क्या? I don't know which resource we will stumble upon. Let's see. And we will stumble upon the resource based on who we are. Oh, this is बहुत अच्छा actually कहा आपने. पात्रता again, actually घूम फिर के सब कुछ पात्रता पे ही आ रहा है. अब वही आती है और कहीं नहीं गई. आपको गुरु भी मिलेगा जैसी आपकी पात्रता होगी, और गुरु को आप नहीं ढूंढ सकते, गुरु आपको ढूंढेगा.
ये याद रखिएगा, इसलिए कभी चेष्टा मत थैंक कीजिएगा। यू हम सबको ढूंढने के लिए ऋचा। अरे बाप रे। लेकिन हाँ, ऐसा ही है, प्रार्थना में बने रहिए, इसमें बड़ा मौज है। टू हैव दैट पर्सनल रिलेशनशिप, एक निजी संबंध उसके साथ जिसका कुछ पता नहीं है, क्योंकि वो संबंध आपको ये बताता है दैट यू आर बीइंग टेकन केयर ऑफ इन वॉट एवर वे। हो सकता है आपकी जो स्थिति हो, you may not define it to be a very conducive one, comfortable one, परंतु ये भाव कि जैसे एक बच्चे को माँ थप्पड़ लगाती है तो बच्चे को बड़ा बुरा लगता है, पर क्या बच्चे को पता है कि उसे थप्पड़ कुछ सही वजहों से पड़ रहा है, जिसका ज्ञान माँ को है। वो बच्चा जब आप बन जाते हैं जो ये कहता है कि मुझे पढ़ भी रहे हैं थप्पड़ तो मुझे नहीं पता इसमें मेरा क्या भला छुपा है, किंतु इससे मेरा कुछ तो भला ही होगा, ठीक इसी को श्रद्धा कहते हैं। श्रद्धा का जो इटिमोलॉजिकल अर्थ है ना, वो सत, मैं इसका आपको संस्कृत वो दे दूंगी, इसका मतलब होता है क्लिंगिंग टू ट्रुथ। हर एक परिस्थिति में चाहे कुछ भी हो जाए, मैं सत्य को पकड़ के रखूं, उसके साथ चिपके रहूं, मैं डगमगाऊं नहीं कि इसके कारण ये नहीं हो रहा है, उसके कारण वो नहीं हो रहा है, मेरी स्थिति तो ऐसी है फिर भी। नो, सो दिस personal relationship with that which I have no clue of, it's a very beautiful thing one must have. That gives a lot of strength to move on even in the most difficult time, and that brings amazing beauty to your life, because we know that we can't depend upon ourselves, and there you are depending upon something which you have no clue of, and that is where all the prayers is about keep me focused, please do not allow me to deviate from this path, please do not allow me to deviate from this path. और फिर आपकी पुकार जितनी गहरी होगी, आपको उतने सुंदर और सुदृढ़ गाइडेंस मिल जाएंगे। That's a process. अब ये कैसे होता है, that cannot be rationalized, but this is how it happens. That I can tell you for sure. ठीक है, प्रार्थना करें। Please sit straight. Close your eyes. Those who know can sing along with me, or else you can stay with it. We do the Shanti part from Main Upanishad. Take a deep breath. Om Purnamadah Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamādaya Purnameva Avashishyate. Om Shanti Shanti Shanti. Thank you, everyone. Richa, can you stay back for